मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विकल्प ए त्वचा, विकल्प बी जिगर, विकल्प सी दिल, विकल्प डी मस्तिष्क। What is the largest organ in the human body? Option A, skin. Option B, liver. Option C, heart. Option D, brain. Correct answer is option A, skin. किस हड्डी को कॉलर बोन के नाम से जानी जाती है? विकल्प ए स्कैपुला, विकल्प बी फीमर, विकल्प सी क्लेविकल, विकल्प डी टिबिया। किस हड्डी को कॉलर बोन के नाम से जानी जाती है? विकल्प ए स्कैपुला, विकल्प बी फीमर, विकल्प सी क्लेविकल, विकल्प डी टिबिया। Correct answer is option C, clavicle. एल्वेओलाई का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प ए पाचन, विकल्प बी श्वसन, विकल्प सी रक्त संचारण, विकल्प डी हार्मोन उत्पादन। What is the primary function of the alveoli? Option A, digestion. Option B, respiration. Option C, blood circulation. Option D, hormone production. Correct answer is option B, respiration. मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? विकल्प ए सीरेबेलम, विकल्प बी मेडुला ऑब्लांगाटा, विकल्प सी सीरिब्रम, विकल्प डी हाइपोथैलेमस। Which part of the brain controls balance and coordination? Option A, cerebellum. Option B, medulla oblongata. Option C, cerebrum. Option D, hypothalamus. Correct answer is option A, cerebellum. शरीर में सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है? विकल्प ए आर्टेरी, विकल्प बी फीमोरल आर्टेरी, विकल्प सी कैरोटिड आर्टेरी, विकल्प डी रेडियल आर्टेरी। What is the name of the largest artery in the body? Option A, aorta. Option B, femoral artery. Option C, carotid artery. Option D, radial artery. Correct answer is option A, aorta. इंसुलिन उत्पादित करने वाले अंग कौन सा है? विकल्प ए जिगर, विकल्प बी पैंक्रियस, विकल्प सी किडनी, विकल्प डी स्प्लीन। Which organ produces insulin? Option A, liver. Option B, pancreas. Option C, kidney. Option D, spleen. Correct answer is option B। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? विकल्प ए स्टेप्स, विकल्प बी फीमर, विकल्प सी टिबिया, विकल्प डी रेडियस। What is the smallest bone in the human body? Option A, stapes. Option B, femur. Option C, tibia. Option D, radius. Correct answer is option B। इनमें से कौन स्केलेटल सिस्टम का कार्य नहीं है? विकल्प ए गति, विकल्प बी रक्त संचारण, विकल्प सी सुरक्षा, विकल्प डी खनिज भंडारण। Which of these is not a function of the skeletal system? Option A, movement. Option B, blood circulation. Option C, protection. Option D, mineral storage. Correct answer is option B, circulation. कौन सा मांसपेशी श्वासन में मदद करता है? विकल्प ए बाइसेप्स, विकल्प बी क्वाड्रिसेप्स, विकल्प सी डायाफ्राम, विकल्प डी हैमस्ट्रिंग्स। Which muscle helps in breathing? Option A, biceps. Option B, quadriceps. Option C, diaphragm. Option D, hamstrings. Correct answer is option
कौन सा रक्त प्रकार सर्वसाधारण दाता के रूप में जाना जाता है? विकल्प ए विकल्प, बी विकल्प, सी AB विकल्प, D O। Which blood type is known as the universal donor? Option A option B option C, AB option D, O। Correct answer is मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? विकल्प A सीरेबेलम, विकल्प B मेडुला ऑम्बलांगाटा, विकल्प C cerebrum, विकल्प D hypothalamus। What is the largest part of the human brain? Option A cerebellum, option B medulla oblongata, option C cerebrum, option D hypothalamus। correct answer is option C। इनमें से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? विकल्प A तापमान नियंत्रण, विकल्प B संवेदना, विकल्प C विटामिन उत्पादन, विकल्प D सुरक्षा। Which of these is not a function of the skin? Option A temperature control, option B sensation, option C vitamin production, option D protection। correct answer is option C। लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है? विकल्प A संघर्ष संक्रमण, विकल्प B ऑक्सीजन ले जाना, विकल्प C रक्त थक्का करना, विकल्प D पोषक तत्व संचय करना। What is the primary function of the red blood cells? Option A fight infection, option B carry oxygen, option C clot blood, option D store nutrients। correct answer is option B। आंख का कौन सा हिस्सा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? विकल्प A पुपिल, विकल्प B आइरिस, विकल्प C कॉर्निया, विकल्प D रेटिना। Which part of the eye controls the amount of light entering? Option A pupil, option B iris, option C cornea, option D retina। correct answer is option B। इनमें से कौन सा पाचक तंत्र का हिस्सा नहीं है? विकल्प A जिगर, विकल्प B पेट, विकल्प C किडनी, विकल्प D छोटे आंत। Which of these is not a part of the digestive system? Option A liver, option B stomach, option C kidney, option D small intestine। correct answer is option C। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? विकल्प A ग्लूटियस मैक्सिमस, विकल्प B क्वाड्रिसेप्स, विकल्प C बाइसेप्स, विकल्प D hamstrings। What is the largest muscle in the human body? Option A gluteus maximus, option B quadriceps, option C biceps, option D hamstrings। correct answer is option A maximus। कौन सी हड्डी जोड़ी भी पटेला के नाम से जानी जाती है? विकल्प A फीमर, विकल्प B टिबिया, विकल्प C पटेला, विकल्प D फिबुला। Which bone is also known as the kneecap? Option A femur, option B tibia, option C patella, option D fibula। correct answer is option C। लिम्फेटिक प्रणाली तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प A ऑक्सीजन परिवहन, विकल्प B संघर्ष संक्रमण, विकल्प C पाचन, विकल्प D रक्त पंप। What is the main function of the lymphatic system? Option A transport oxygen, option B fight infection, option C digestion, option D pump blood। correct answer is option B infection।
मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? विकल्प ए सीरेबेलम, विकल्प बी मेडुला ऑब्लांगाटा, विकल्प सी सीरिब्रम, विकल्प डी हाइपोथैलामस। Which part of the brain controls hunger and thirst? Option A, cerebellum. Option B, medulla oblongata. Option C, cerebrum. Option D, hypothalamus. Correct answer is option D, hypothalamus. आवाज के बॉक्स का चिकित्सा नाम क्या है? विकल्प ए लैरिंक्स, विकल्प बी ट्रेकिया, विकल्प सी pharynx, विकल्प डी esophagus. What is the medical term for the voice box? Option A, larynx. Option B, trachea. Option C, pharynx. Option D, esophagus. Correct answer is option A, larynx. कौन सा अंग शरीर में रक्त को फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार है? विकल्प ए जिगर, विकल्प बी पैंक्रियस, विकल्प सी किडनी, विकल्प डी स्प्लीन. Which organ is responsible for filtering blood in the body? Option A, liver. Option B, pancreas. Option C, kidney. Option D, spleen. Correct answer is option C. जोड़ों को स्नेहित करने वाला तरल कौन सा है? विकल्प ए लस्सी का, विकल्प बी प्लाज्मा, विकल्प सी सिनोवियल तरल, विकल्प डी सेरेब्रोस्पिनल तरल. What is the name of the fluid that lubricates joints? Option A, lymph. Option B, plasma. Option C, synovial fluid. Option D, cerebrospinal fluid. Correct answer is option C, synovial fluid. मांसपेशियों का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? विकल्प ए गति, विकल्प बी रक्त संचारण, विकल्प सी ऊर्जा उत्पादन, विकल्प डी समर्थन. Which of these is not a function of the muscular system? Option A, movement. Option B, blood circulation. Option C, heat production. Option D, support. Correct answer is option B, circulation. कौन सी रक्त वाहिकाएं दिल से दूर ले जाती हैं? विकल्प ए आर्टरीज, विकल्प बी वेन्स, विकल्प सी कैपिलरीज, विकल्प डी venules. Which blood vessels carry blood away from the heart? Option A, arteries. Option B, veins. Option C, capillaries. Option D, venules. Correct answer is option B. कौन सा हिस्सा मस्तिष्क की आंतरिक घड़ी को नियंत्रित करता है? विकल्प ए सीरेबेलम, विकल्प बी मेडुला ऑब्लांगाटा, विकल्प सी सीरिब्रम, विकल्प डी pineal gland. Which part of the brain regulates the body's internal clock? Option A, cerebellum. Option B, medulla oblongata. Option C, cerebrum. Option D, pineal gland. Correct answer is option D, pineal gland. प्राणी में वायु मार्ग का चिकित्सा नाम क्या है? विकल्प ए लैरिंक्स, विकल्प बी ट्रेकिया, विकल्प सी pharynx, विकल्प डी esophagus. What is the medical term for the windpipe? Option A, larynx. Option B, trachea. Option C, pharynx. Option D, esophagus. Correct answer is option B, trachea. कौन सा अंग खाने के पाचन में पित्त उत्पन्न करता है? विकल्प ए जिगर, विकल्प बी पैंक्रियस, विकल्प सी किडनी, विकल्प डी स्प्लीन. Which organ produces bile to aid in digestion? Option A, liver. Option B, pancreas. Option C, kidney. Option D, spleen. Correct answer is option A.
गर्भाशय में पित्त स्टोर करने वाला छोटा गेंद का नाम क्या है? विकल्प ए गैल ब्लैडर, विकल्प बी अपेंडिक्स, विकल्प सी पैंक्रियस, विकल्प डी स्प्लीन। What is the name of the small sac that stores bile? Option A, gallbladder. Option B, appendix. Option C, pancreas. Option D, spleen. Correct answer is option A, gallbladder। स्वेच्छाचारी कार्रवाइयों को नियंत्रित करने वाला हिस्सा कौन सा है? विकल्प ए सीरेबेलम, विकल्प बी मेडुला ऑब्लांगाटा, विकल्प सी सीरिब्रम, विकल्प डी हाइपोथैलेमस। Which part of the brain controls involuntary actions? Option A, cerebellum. Option B, medulla oblongata. Option C, cerebrum. Option D, hypothalamus. Correct answer is option B, कंधे की हड्डी का चिकित्सा नाम क्या है? विकल्प ए स्केपुला, विकल्प बी क्लेविकल, विकल्प सी फीमर, विकल्प डी टिबिया। What is the medical term for the shoulder blade? Option A, scapula. Option B, clavicle. Option C, femur. Option D, tibia. Correct answer is option A। इनमें से कौन सा मध्य तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? विकल्प ए ब्रेनस्टेम, विकल्प बी स्पाइनल कॉर्ड, विकल्प सी सीरेबेलम, विकल्प डी सीरिब्रम। Which of these is not a part of the central nervous system? Option A, brainstem. Option B, spinal cord. Option C, cerebellum. Option D, cerebrum. Correct answer is option C, cerebellum। सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प ए ऑक्सीजन ले जाना, विकल्प बी संघर्ष संक्रमण, विकल्प सी रक्त थक्का करना, विकल्प डी पोषक तत्व संचय करना। What is the primary function of the white blood cells? Option A, carry oxygen. Option B, fight infection. Option C, clot blood. Option D, store nutrients. सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प ए ऑक्सीजन ले जाना, विकल्प बी संघर्ष संक्रमण, विकल्प सी रक्त थक्का करना, विकल्प डी पोषक तत्व संचय करना। What is the primary function of the white blood cells? Option A, carry oxygen. Option B, fight infection. Option C, clot blood. Option D, store nutrients. Correct answer is option B। आंख का कौन सा हिस्सा दृष्टि के लिए जिम्मेदार है? विकल्प ए पुपिल, विकल्प बी आइरिस, विकल्प सी कॉर्निया, विकल्प डी रेटिना। Which part of the eye is responsible for vision? Option A, pupil. Option B, iris. Option C, cornea. Option D, retina. Correct answer is option B, retina। इनमें से कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? विकल्प ए फेफड़े, विकल्प बी ट्रैकिया, विकल्प सी जिगर, विकल्प डी डायाफ्राम। Which of these is not a part of the respiratory system? Option A, lungs. Option B, trachea. Option C, liver. Option D, diaphragm. Correct answer is option C। छोटे आंत का पहला हिस्सा का नाम क्या है? विकल्प ए ड्यूडेनम, विकल्प बी जेजुनम, विकल्प सी आइलियम, विकल्प डी कोलन। What is the name of the small intestine's first part? Option A, duodenum. Option B, jejunum. Option C, ileum. Option D, colon. Correct answer is option A। कौन सी हड्डी आमतौर पर जांघ की हड्डी के रूप में जानी जाती है? विकल्प ए
फीमर, विकल्प बी टिबिया, विकल्प सी पटेला, विकल्प डी फिबुला। Which bone is commonly referred to as the thigh bone? Option A, femur. Option B, tibia. Option C, patella. Option D, fibula. Correct answer is option A. अंतःस्रावी तंत्रिका का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प ए संघर्ष संक्रमण, विकल्प बी शरीर के कार्यों को नियंत्रित करना, विकल्प सी पाचन, विकल्प डी हार्मोन नियंत्रण। What is the main function of the endocrine system? Option A, fight infection. Option B, control body functions. Option C, digestion. Option D, hormone regulation. Correct answer is option D hormone regulation। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला हिस्सा कौन सा है? विकल्प ए सीरेबेलम, विकल्प बी मेडुला ऑब्लांगाटा, विकल्प सी सीरिब्रम, विकल्प डी हाइपोथैलेमस। Which part of the brain controls body temperature? Option A, cerebellum. Option B, medulla oblongata. Option C, cerebrum. Option D, hypothalamus. Correct answer is option D hypothalamus। छाती की हड्डी का चिकित्सा नाम क्या है? विकल्प ए क्लेविकल, विकल्प बी स्कैपुला, विकल्प सी स्टर्नम, विकल्प डी टिबिया। What is the medical term for the breastbone? Option A, clavicle. Option B, scapula. Option C, sternum. Option D, tibia. Correct answer is option C। मूत्र उत्पादन के लिए जिम्मेदार अंग कौन सा है? विकल्प ए जिगर, विकल्प बी पैंक्रियास, विकल्प सी किडनी, विकल्प डी स्प्लीन। Which organ is responsible for producing urine? Option A, liver. Option B, pancreas. Option C, kidney. Option D, spleen. Correct answer is option C। मस्तिष्क को घेरने वाला तरल क्या है? विकल्प ए लाइम्फ, विकल्प बी प्लाज्मा, विकल्प सी सिनोवियल तरल, विकल्प डी cerebrospinal तरल। What is the name of the fluid that surrounds the brain? Option A, lymph. Option B, plasma. Option C, synovial fluid. Option D, cerebrospinal fluid. Correct answer is option D cerebrospinal fluid। इनमें से कौन सा इंटीग्मेंट्री सिस्टम का कार्य नहीं है? विकल्प ए सुरक्षा, विकल्प बी संवेदना, विकल्प सी विटामिन उत्पादन, विकल्प डी रक्त संचारण। Which of these is not a function of the integumentary system? Option A, protection. Option B, sensation. Option C, vitamin production. Option D, blood circulation. Correct answer is option C production। रक्त को दिल तक वापस ले जाने वाली धमनियां कौन सी होती हैं? विकल्प ए आर्टरीज, विकल्प बी वेन्स, विकल्प सी कैपिलरीज, विकल्प डी venules। Which blood vessels carry blood back to the heart? Option A, arteries. Option B, veins. Option C, capillaries. Option D, venules. Correct answer is option B। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति के लिए जिम्मेदार है? विकल्प ए सीरेबेलम, विकल्प बी मेडुला ऑब्लांगाटा, विकल्प सी सीरिब्रम, विकल्प डी हिप्पोकैम्पस। Which part of the brain is responsible for memory? Option A, cerebellum. Option B, medulla oblongata. Option C, cerebrum. Option D, hippocampus. Correct answer is option D hippocampus। कौन सा अंग रक्त से फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार है? विकल्प ए जिगर, विकल्प बी पैंक्रियास,
विकल्प सी गुर्दा, विकल्प डी तिल्ली। Which organ is responsible for filtering waste from the blood? Option A, liver. Option B, pancreas. Option C, kidney. Option D, spleen. Correct answer is option C। गले को पेट से जोड़ने वाली नली का नाम क्या है? विकल्प ए गर्दनी, विकल्प बी नसिका, विकल्प सी जिब, विकल्प डी आंतश्मश्रोणी। What is the name of the tube that connects the throat to the stomach? Option A, larynx. Option B, trachea. Option C, esophagus. Option D, pharynx. Correct answer is option C, esophagus। कौन सा अंग इच्छा शक्ति नियंत्रित करता है? विकल्प ए सीरेबेलम, विकल्प बी मेडुला ऑब्लांगाटा, विकल्प सी सीरेब्रम, विकल्प डी हाइपोथैलामस। Which part of the brain controls voluntary movements? Option A, cerebellum. Option B, medulla oblongata. Option C, cerebrum. Option D, hypothalamus. Correct answer is option C। जांघ की हड्डी के लिए चिकित्सा शब्द क्या है? विकल्प ए क्लेविकल, विकल्प बी स्केपुला, विकल्प सी स्टर्नम, विकल्प डी टिबिया। What is the medical term for the thigh bone? Option A, clavicle. Option B, scapula. Option C, femur. Option D, tibia. Correct answer is option C। कौन सा अंग रक्त शुगर स्तरों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? विकल्प ए जिगर, विकल्प बी पैंक्रियास, विकल्प सी गुर्दा, विकल्प डी तिल्ली। Which organ is responsible for regulating blood sugar levels? Option A, liver. Option B, pancreas. Option C, kidney. Option spleen. Correct answer is option A, गर्दन में कौन सी ग्रंथि हार्मोन उत्पन्न करती है जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं? विकल्प ए थायराइड, विकल्प बी पिट्यूटरी, विकल्प सी एड्रेनल, विकल्प डी पैराथायरॉइड। Which gland in the neck produces hormones that regulate metabolism? Option A, thyroid. Option B, pituitary. Option C, adrenal. Option D, parathyroid.